नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह फाउंडर हूँ रूह-ए-मोहब्बत का। और आज फिर आप सबके साथ लेके आया हूँ हमारे नए गेस्ट को, वैशाली मिश्रा, इनटू आवर क्रिएटिव टॉक्स। ये एक और ऑथर हैं, उसके साथ-साथ आर्किटेक्ट हैं। पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इनके बारे में, क्योंकि ये खुद बताएँगे हमें कि ये आगे करते क्या हैं और फिर हम लेके चलेंगे इनके लाइफ जर्नी पे। तो वैशाली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi Manoj, it is good to be here, and this is Vaishali Mishra, and I am Delhi. And what do you want to, what do you want me to talk about first? पहले तो आप As हमें अपने बारे में बताएँ, थोड़ा-सा आपके बारे में हमारे ऑडियंसेस को बताएँ। अच्छा, ओके, तो मैं दिल्ली से हूँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वर्क फॉर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हियर इन दिल्ली ओनली, in an architecture firm, as under the title of architect, but I did my diploma in architecture and my BTech in civil engineering. तो अब मेरे को 9 साल हो गए हैं काम करते हुए इसी फील्ड के अंदर। I have changed multiple times, I have changed multiple organizations. So yeah, that is what I do currently. And apart from that, I love writing, and I guess that is what we're going to discuss about here. And apart from that, I'm building my business as well, because I don't believe in working a job for the rest of my life. हुँ, So that is why parallelly building my business, so that eventually I get out of the 9 to 5 rut that we call. And it's not 9 to 5, we all know, right? So yeah, येस, this is what I'm doing at present. दैट इज़ वंडरफुल, दैट इज़ वंडरफुल। सो आज हमारे ऑडियंसेस को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा एंड दे विल एक्चुअली एन्जॉय लिसनिंग टू यू बिकॉज़ यू आर someone who is constructing someone's home, and at the same time you are writing with your creativity and you are an entrepreneur also. तो ये तो काफ़ी अच्छा मिक्स है एंड अब हम मिक्सी को ऑन करने जा रहे हैं। सो वैशाली, टेल मी, आप हैं कहाँ से? मूलतः आप दिल्ली से ही हैं या फिर और किसी पार्ट ऑफ इंडिया से? राइट, एक्चुअली मैं कहूंगी कि मैं दिल्ली से ही हूँ, बिकॉज माई पेरेंट्स both my parents were from Chandni Chowk. It's also a place in Delhi only. ओके, And my nana nani and my dada dadi वो भी दिल्ली से चांदनी चौक से थे, टू बी पर्टिकुलर। ओके, तो वो बेसिकली वो दिल्ली आए थे, हाँ, तो वो वैसे उनका ओरिजिन है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ के पास कोई गांव, मेरे को नाम नहीं याद, because I अच्छा, have never visited there honestly. ओके, So this is what I know since I was born. So हाँ, I call it my home, and I say that I'm from Delhi. So yeah. एग्ज़ैक्टली पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक मतलब पुरानी दिल्ली, राइट? Yeah. तो जब हम पुरानी दिल्ली की बात करते हैं, बहुत नाम सुना है हमने, मैं भी कुछ साल दिल्ली में रहा हूँ और चांदनी चौक कई बार जब गया हूँ, तो कभी कुछ शॉपिंग के लिए या घूमने के लिए वेरी कंजेस्टेड। तो थोड़ा-सा हमें, क्योंकि अब आप वहीं पे पैदा हुई हैं, वहीं पे बड़ी हुई हैं, थोड़ा-सा हमें चांदनी चौक की खूबसूरती के बारे में बताइए। एक्चुअली मैं पैदा और बड़ी हुई हूँ, इट्स नॉट इन चांदनी चौक, इट वाज माय पेरेंट्स। बट हाँ, मतलब बचपन से हम वहाँ बहुत जाते रहे हैं, क्योंकि मेरे नानी का घर वहीं पे था। तो यस, बहुत कंजस्टेड गलियां हैं वहाँ की, मतलब एक इंसान निकल सकता है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट वन कार, बट दीज आर सो नैरो स्ट्रीट्स कि वहां से दो लोग साथ में नहीं निकल सकते। So it's very it is that way. But being having that origin, from being Purani Delhi, I love eating food, and I love eating spicy, and we talk loud in our house because that is, I don't want to generalize it, but this is what I've seen growing up. So ओके। these are some traits जो चांदनी चौक वाले की होते हैं। तो yeah. Yes, so this is a bit of taste of Chandni Chowk for every one of you. Now we will listen to some of the poems that are Chandni Chowk origin से आ रहा है, and but before we listen to the poems, because it is Ruhe-Mohabbat और बिना पोएट्री के तो हमारा देखिए आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं हम। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि वैशाली ने एक बुक भी लिखी हुई है, ऑथर किया हुआ है उन्होंने, तो थोड़ा-सा हमें उसके बारे में बताएँगी वैशाली? Certainly, Manoj. I started writing pretty early in my life.
तो पहले तो सोशल मीडिया नहीं होता था, तो मैं सिर्फ अपने तक रखती थी। पर जैसे-जैसे आई थिंक आई स्टार्टेड यूजिंग इंस्टाग्राम इन 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तब से मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट किया, मैं जो भी लिखती थी अपनी पोएट्री। और जनरली वो पोएट्री लव और लाइफ पे होती थी कि जो भी एक्चुअली मैं अपने आप से इंस्पायर होती थी, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है बेसिकली, because I don't know how to write, without you cannot write without imagining, first of all, right? And imagination, you can probably exaggerate some things, but there has to be some truth in that exaggeration. Exactly. So as you go through the life, and you can pick just one word you are feeling right now, and then you can exaggerate a little bit, and that becomes poetry, at least for me, right? So in 2019, when I started sharing, it was, I had a private Instagram profile. तो जो भी मेरे friends थे, जो भी मेरे colleagues थे, they really supported it, and they really encouraged me that I really write good and I should write often. So that is how I think from 2019 beginning till 2020 end, I एक ऐसा point बना लिया था मैंने कि I'll write one poetry per day, which by the way I have discontinued for now, for I don't know why, but it was a very good habit I got into, रोज एक poem लिखना. तो अगर जैसे आप पूछे, मेरी किताब का नाम है Wordings of My Breath. This is the book. और ये book basically it's all about love and life, and it is divided into 4 parts, okay, 4 stages, where what you feel when you start feeling for someone, and like from whatever my experience has been, Manoj, it is funny, but I have always been in a one-sided relationship, okay, because I don't know why, but I'm in my head always. Okay. Right? So even the other person doesn't know that I'm into him, and I start feeling. So when you are in such kind of a relationship, which is not even a relationship, so what happens is, it ends very I would say painfully. Right? So I tried outlining it into this book into 4 stages, 4 sections, and to be very precise, I'll read the 4 sections from it only. First one is waves of love, meaning कि जहाँ में हल्का हल्का लगने लगता है कि okay, when you see another person and your face lights up, and you feel a little bit refreshed, and then trickling tickling, where you it's like that butterfly phase where your stomach is filled with butterflies. Then crashing waves, when you get hit by reality. Oh shit, it's when you realize that okay, it's in your head, it's not like true, right? And then the silent waters, because once the waves crash, it's really chaotic. Okay, your life starts it crumbling down, because you had a good story in your head, and it started crashing and crumbling. So what happens after that? Every silence precedes that chaos. और जैसे chaos होता है, there will be a silent, the water will be silent. So it's basically like crushing on someone and not able to tell that person that I have a crush on you and let's have a relationship, right? Yeah, again, this is very difficult, right? To express oneself. Because if you are an introvert, most of the time I have found only majority of the writers are introverts, right? They may express so profoundly in their writing. Writing में तो भाई कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, हम इतना बहुत कुछ कह जाते हैं लिखने में, पर जब बोलने की बात आती है तो थोड़ा सा चुप्पी छा जाती है, right? तो ऐसा ही कुछ शायद मुझे लग रहा है कि आपके साथ भी हुआ है। और अच्छा ये बताइए ऐसा कितने बार हुआ है कि सिर्फ एक ही बार हुआ है? आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, क्योंकि इसमें एक लाइन है जो मतलब पोयम ही है, बट वो पोयम के कलेक्शन के साथ नहीं, अलग से लिखी हुई है।
हाँ, तो आप और जो भी अगर वो पोएम का हिस्सा है और वो पोएम इस किताब का हिस्सा है, तो कुछ लाइनें हम चाहेंगे कि आप पढ़ के सुनाएं, क्योंकि हमें भी पता बिल्कुल, चले, हमारे ऑडियंस को भी पता चले कितनी खूबसूरत लाइनें लिखी हैं आपने अपनी उस किताब में। बिल्कुल। ये ना सबसे फर्स्ट पेज पे है, पोएम शुरू होने से भी पहले, आई थिंक लाइट की वज़ह से दिखेगा नहीं। ओके। तो इसे जब भी कोई ये लाइन पढ़ता है तो वो सोचते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए डेडिकेटेड है लाइन, जी। ठीक है? जी। तो वो एक फन फैक्ट है जो मैं मतलब एक बर्स्ट बर्स्ट करने वाली हूँ गलतफ़हमी को। हाँ, सो द हाँ। लाइन्स ना, पहले मैं लाइन्स पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बताती हूँ। जी। It says like saying only she loved him would not be right. He loved her too, howbeit sometimes. Okay. तो मतलब ये इसका ये मतलब है कि सिर्फ वो उसे पसंद करती हैं, प्यार करती हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। दैट अदर पर्सन आल्सो लव हर, बट कभी-कभी, व्हेनेवर इज कन्वीनिएंट फॉर द अदर पर्सन, राइट? यस। सो देन आई थिंक ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ तब राइट, तो उसने ये है कि कभी-कभी तो हिंट दिया, देखो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। right. राइट। So yeah, that is why, that is, I think it really covers up a lot of relationships in general. Okay, this यस। book. तो जो भी रीडर है वो भले ही कुछ ना कुछ पार्ट से लेकिन जरूर रिलेट करेगा, इफ दे हैव एवर बीन इन लव, okay, no matter one sided, no matter two sided. Okay, after this poetry line there is, there's something written in bracket and it says like dedicated to no one, because that is what I call him. Okay, dedicated to no one because that is what I call him. Now people think that this is somebody specific or someone. No, the way I look at it, और मैंने वो line क्यों लिखी थी, is every toxic relationship, हाँ, one sided or two sided, I have had till date. हाँ, हाँ। मैंने उसे एक generalize करके I gave him the pronoun he. ओके, ऐसा ओके। नहीं है कि दिस इज अ पर्टिकुलर पर्सन, बट अब तक मैं जितनी भी रिलेशनशिप्स में रही हूँ या एक्सपीरियंस, राइट? जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ के अंदर, हुँ। तो दैट इज इट बेसिकली कंपाइल्स ऑल माय एक्सपीरियंसेस. इट्स ओके, नॉट दैट कि ये किसी एक के लिए है या नहीं, ऐसा ओके। कुछ सो भी नहीं ये खट्टा-खट्टा ही रहा या फिर कुछ मीठा भी रहा है इसमें? है. लाइफ इज लाइक दैट, इट्स या खट्टा एंड मीठा. यस, Right. यस। That is why it starts with, how the love begins. Because हाँ, that was the sweet part. But यस। how it ended, it was the sour part. Right? Or, at the end of the day, it is what makes you you. It's your decisions. यस, Right? एग्ज़ैक्टली। So, at that at that point of time, आपके decisions आपको शायद बहुत अच्छे लगेंगे, हाँ, बट 2-3 years डाउन द रोड आप उन्हें देखोगे, बाद में सोचोगे तो इतना सिली लगेगा कि ओ हाँ। माय गॉड, अच्छा ऐसा भी किया था कभी. सो मतलब खट्टा मीठा, आई वुड से, इट्स नॉट Exactly. जस्ट And now it is खट्टा. actually a reverse of what nature does, right? अंगूर पहले खट्टे होते हैं, फिर जाके मीठा हो जाता है। पर कभी-कभी मोहब्बत जो है पहले मीठी होती है, फिर बाद में खट्टी हो जाती है। पर हम रूहे मोहब्बत पे हैं और रूहे मोहब्बत इज़ सोलफुल लव। तो रूह से मोहब्बत का कोई स्वाद नहीं होता, कोई ऐसा अलग एहसास नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रूहों के साथ होता है। तो यहाँ पे ब्यूटिफुल. हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, हमें सिर्फ़ प्यार करना है, मोहब्बत है हमारे इस पे प्लेटफ़ॉर्म पे, तो इसीलिए हम रूह-ए-मोहब्बत हैं एंड वी आर एसोसिएटेड विद कॉज़ इन आवर सोसाइटी, सो वी आर पोएट्री फॉर कॉज़। उस चीज़ को हम लेके चले हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा हम आगे बढ़ें, तो उससे पहले कुछ एक कविता आप हमें अगर पढ़ के सुना दें आपकी बुक से या फिर कुछ और आपने और लिखा है अलग से हमारे लिए, कुछ रखा है अपने खज़ाने में तो उसे हमें सुनाएँ। लिखा तो है, एक्चुअली मैं अभी दूसरी बुक लिखने के प्रोसेस में हूँ. अच्छा,
तो अभी मैंने कुछ पोएट्रीज उसमें भी लिखी हैं, अभी क्या मेरे को और बात है, भी। क्या बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो देखिए साहब, अभी मार्केट में आया नहीं है सामान, और उससे पहले हम आपको दे रहे हैं एंड एक्सक्लूसिव रूहे मोहब्बत पे। तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा, और पहली बुक का भी लिंक हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी जरूर बाय करके आप पढ़ लीजिएगा। पहले जो सेकंड बुक आ रही है उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं मुखड़ा कैसा है जी। ओके, सो आई आई थिंक ये मेरी उस दूसरी बुक की पहली पोयम होगी जो मैं सुनाने जा रही हूँ। जी जी। And it goes like that, and like a bullet passes through you, seizing your breath, everything comes to a halt at once. Screeching halt, going numb, listening, breath of my heart. So basically, it's about, if I say uh, a bullet metaphor is used to describe how you feel when you can call it, love at first sight, probably, or I don't know, love at first sight, or probably attraction at first sight. I cannot, like, pinpoint which one it is, but this is how you feel. Okay, because when a bullet passes through you, everything stops, Exactly. all of a sudden. Yes. I hope that it works that way, because I have never had a bullet, thankfully. See, for me, I thought it is starting with the broken heart. That जब दिल टूट जाता है तो सब कुछ थम सा जाता है, कुछ पता नहीं चलता। पर कई बार हाँ, जब कोई ऐसा दिख जाए, वो भी सीने में ऐसे ही घुस जाए, राइट? तो उस समय भी कुछ ऐसा लगता है कि पल थम गया, और वो प्यार का एहसास, वो मीठा सा दर्द, कुछ वैसा भी महसूस होता है। तो ब्यूटीफुली यू हैव रिटन इट, एंड ये ऑडियंस के ऊपर है, रीडर्स के ऊपर है कि वो उसे It's क्या समझ yeah, रहे it's हैं, open राइट? to, and यस, I guess every art form, may it be a poetry, may it be a painting, it's always open to interpretation. यस, कि सामने एग्जैक्टली, वाला कैसा लेता है, right? exactly. So I yeah, had the picture as you were reading it. I had the picture in my head. I could see the bullet hitting the heart, right? And still in silent, I could hear the heartbeat, right? Bullet has hit the heart, but still you can hear the heartbeat. How is it that right, possible, right? right. So I probably एक कवि मुझ में भी है. अरे बिल्कुल. You are the director of the page, called Ruh-E-Mohabbat, which supports poetry. So Yeah. I'm sure you have that knack of knowing, okay, this is the poetry, and being a poet yourself. Maybe you know it, maybe you don't know it, maybe you'll explore in a later stage, but yes. यस, कोशिश है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम भी जब नफ्स हमारे हमसे मिलती है फ्रीक्वेंसी, राइट, तो हम भी उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं और चलते चलते हैं। कोशिश ऐसी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये बताइए मुझे, आप बोल रही थी कि यू स्टार्टेड वेरी अर्ली राइटिंग, राइट? सो व्हेन डिड यू स्टार्ट राइटिंग एग्जैक्टली? I cannot like pinpoint it, but because I have been an introvert since beginning only. ओके, Okay, and slowly, when I came to my like office life and everything, I became a little bit ambivert, where I am only a talkative person when I am around people I'm comfortable with, एग्जैक्टली, right? या, So what happens is, when you are an introvert, it's not that you don't have thoughts, or it's not that you don't want to speak, it's just you don't feel comfortable enough. So when you have a lot of things to say inside your head, I used to maintain a journal too, to keep my sanity, I would say. Right? So I used to write my day to day things into it, and amongst that, I think I started writing poetries, if I'm not wrong, around when I was 16, 17. Right? I don't want to be precise because I don't know the exact ओके, age or the date, but yeah, it's been okay. like So pretty. the stage of adolescence, right? Yeah, Am I an you can say. adult or a teenager, right? So, Right. Right. so that stage, a stage of confusion where you try to see clarity. So writing say clarity aati hai, exactly, that is true. So
अनदर क्वेश्चन जो है वो उनके लिए जो जिन्होंने अभी तक लिखना शुरू नहीं किया बट ये हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, क्रिएटिव टॉक्स देख रहे हैं या सुन रहे हैं पॉडकास्ट में, तो उनसे उनके लिए है कि अच्छा मुझे ये बताइए राइटिंग आपके लिए क्या है? व्हाट इज राइटिंग टू यू? I can say writing is therapy for me. It is very therapeutic to write it down, because what happens is, hey, first of all, I'm an overthinker. Okay, so when you're an overthinker, you never know when you overthink about your overthinking. So it really gets into that inception stage where, dream within a dream, and, overthinking within an overthinking. So whenever I feel that I'm digressing, or, it's too much to take, the mental pressure is too much. So I just put my pen to my paper. So Exactly. whatever comes to my head, Yes. if even if nothing comes up, I start to draw random things. So I would say writing really serves a healing kind of a thing for me. It serves Yes. that purpose for me. Yes, So exactly. yeah. And we at Ruhe-Mohabbat also believe that the words have power to heal. So when we are writing, it heals us. When people read it, it heals them. And when we are reciting those words, when it resonates with the right people, it helps them heal through the hearing. And when we are speaking it out, again, that is another healing for us, right? Very So when we are doing it, so it is not only for us, it is again for people like us out there whom we may not right. get in touch otherwise, right? सो हम भी अपने रूहे मोहब्बत के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे पोएट्स को, ऑथर्स को इसीलिए लेके आते हैं, उनकी लाइफ जर्नी इसीलिए डिस्कस करते हैं कि कोई कहीं पे किसी कोने में छुपा होगा, वो भी अपने मन के भाव कहना चाहता होगा, बट आपके माध्यम से हो सकता है उसे अपनी बातें सुनने को मिल जाएं, एंड दे मे गेट this new hope, because one should be hopeful because life is beautiful. So हम चाहेंगे कि कुछ आप अपनी बुक में से सुनाएं हमें। Okay. जी। I don't know which to pick and choose. Because रैंडमली पिक कीजिए। हर सेक्शन से हम एक पोएम तो जरूर पढ़ें, सुनना चाहेंगे। okay. Actually, I have a few of them जो मुझे personally बहुत पसंद है. ओके, तब तो और But अच्छा है। but if I go and search for them, it is going to be it's going to be tough, and it's going to be time taking. ओके। So okay, I'll read this one. या। I have never done poetry reading. I have written it, but I've never done that. ओके। All right. If we, in fact, are a universe in ourselves, would that mean we have black holes of our own? Is that why the pull of my gravity yields to yours? For yours is stronger? Is my universe just a meteor to yours? For I am falling, racing, and burning with everything I'm made up of, to fall on you with all the warmth. Would you stop still to receive me in your arms? Or would you let me mix in the millions of other doomed stars? So वाह, this one is one of my favorites. वाह, दिस इज वेरी नाइस। तो अच्छा मुझे ये बताइए आप, आपने कहा कि आप खुद से अपने लाइफ से इंस्पायर होती थी। अदर देन अपने लाइफ से हु इज योर मोटिवेटर एट होम? घर पे कौन है? या कोई ऐसा था कि जो पकड़ लेता था कान, ये क्या लिखने में बैठी रहती है? No, actually, as a matter of fact, my parents doesn't know about the book. They don't know that I have written a book, because from my early life I have seen that they were never supportive of anything in my life. Okay, so sometimes it happens, there becomes a gap between parents and children when you feel that okay, it's too much, where you're not free to share or you have an opinion. So I would say my sister, I have a 3 years younger sister, so I give all the credit to her. Even after my book getting published and everything, she's the one who supported me, who still uh, find people to collaborate with when I have to, when I talk about marketing my book. So she helped me a lot. Okay, that's good. Rajeshwari.
Yeah, Okay, her name that is Rajesh. okay, Rajeshwari, right? Okay, Right. so kudos to you, Rajeshwari, for your supporting hand that you have played, and this is girl power all the way, and all the best to both of you. Okay, and for your future, okay, and your next book to come. अच्छा, अब थोड़ा सा क्विक फायर हो जाए, कुछ थोड़ा सा फन हो जाए, राइट? अच्छा, मैं पूछूंगा, आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं सोचने के लिए। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? Rajma chawal. Okay, what is your favorite mithai? I am not a sweet person. I don't like eating So sweets. what is your favorite khatai? I don't know what that means. I was just joking. Okay, khatai in itself is a khatta, right? So, uh, what is your favorite fruit? I would say strawberry. Okay. What is your favorite place that you visited and another you want to visit? Okay, one of the places, Hoskas, here in Delhi, so it has a lake in it. So it's very Okay. peaceful when you go there, Okay. provided the weather is good, Okay. not in summers, Okay. in winters. And where I want to go, I would say Canada. Okay. Canada is where I want to go. So yeah, Okay. Canada बर्फ भरा हुआ है, जानती हैं आप? yeah, very good. ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ठंडा प्रदेश पसंद है आपको। ओके, तो व्हाट इज योर फेवरेट बेवरेज? Favorite beverage, I would say thumbs up. थम्स अप? अच्छा, और कॉफी या चाय? Chai, ginger हाँ, tulsi तो tea. यहाँ पे आप ने बिल्कुल दिल जीत लिया सारे चाय लवर्स का। थैंक यू सो मच, और मैं भी चाय लवर हूँ, ठीक है? तो इसीलिए कहा मैंने आपको, ठीक है? अच्छा, हु इज योर फेवरेट एक्टर? I'm not into Bollywood. I don't like watching movies or anything. I recently watched a movie called Major. So Avi was the actor's name. Avi De. I don't exactly know his यू full name डोंट as वॉच well. मूवीज? मूवीज नहीं देखती? Animate. Nahi. Okay, who is your favorite cartoon character? Rick and Morty Rick and Morty, comes ये to my कौन mind. है? ये कौन है? ये आजकल के जमाने के कार्टून्स हैं, I would say. अच्छा, आजकल के जमाने के कार्टून से। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं तो दूसरे ही कार्टून्स देखता था ये सारे। अभी कुछ सुनने में आए थे सिंचैन वगैरह I के। used to like Dexter. I used to like Dexter. हाँ, डेक्स्टर तो अगर अच्छा है। पुरानों में से बोलूं तो Dexter. हाँ, डेक्स्टर अच्छा है, और अभी आजकल पोकेमॉन आया है। आई लाइक पोकेमॉन। नेचर के Okay. साथ कनेक्टेड है, एंड दैट थिंग, ये अच्छा लगता है मुझे। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, कैन यू मेक फूड या फिर बाहर से ऑर्डर करना ही पसंद है? I prefer बाहर से order करना because I know how to cook, but what's my problem is I take a long time to cook. Like if I have to make lunch, I have to start like 3 hours before. You need lunch ओके, or ऐसा क्या dinner. बनाती हैं आप? जो भी बनाती हूँ मैं उसमें 3 घंटे लग जाते हैं 3 घंटा किचन में अंदर हो प्रिपरेशन जाता है. टाइम? ओके, पूरे, मेरे ख्याल Preparation से and cooking. पूरे सबके लिए फ्लोर पे, यानी जहाँ काम करती है सबके लिए, दोस्तों आओ, ये आज पार्टी है, आज मैं लंच करने जा रही हूँ, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं अगर एक जने का भी खाना बनाऊंगी तो भी उसमें उतना ही तो भी टाइम 3 लगेगा. घंटे? दैट इज फैंटास्टिक। तो किसी दिन मेरा इनवाइट करूंगा अपने आप को आपके यहाँ, कि आप लंच बनाइए और मैं आऊँ लंच खाने के लिए। जब भी दिल्ली आऊंगा Perfect. तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? तो अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, ठीक है? तो आपकी बुक का इंस्पिरेशन, यानी प्यार से कुछ खट्टे मीठे एक तरफा से एहसास थे, राइट? तो इसको बुक में डालने के लिए किसी ने मोटिवेट किया? सिस्टर इन्वॉल्व थी उसमें? सिस्टर को पता है कि दीदी को भाई इतने बार प्यार हुआ, इतने बार दिल टूटा, ऐसा कुछ है? दीदी उसको पता है? I don't know. I don't know. Actually, we never discuss it. Like we never sit and discuss it specifically. ओके, But if you talk about कि book में डालने के लिए किसने inspire किया, honestly, I would say सबका equal हाथ होगा. Okay, ओके, थोड़ा सबका कि you write so well. Why don't you make a collection of it and put it into a book? ओके, तो ठीक है, मेरे friends and family सबका या. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो एक पोएट्री और हो जाए, जाने से पहले एक पोएट्री और हो जाए, वी आर इन द लास्ट पार्ट, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम, और कुछ अच्छा सा एहसास हो जाए।
वो मीठा-मीठा एहसास कुछ वैसा सा हो जाए। Oh my God! मैं शायरी ज़्यादा कह रहा हूँ आज, राइट? अरे नहीं, that is not a problem, but yeah, I I don't know which one to read. हाँ, Uh, I honestly cannot, pick one. अपनी हर चीज़ पसंद होती है लेखक को, बनाने वाले को, मगर फिर भी एक कुछ हमारे लिए चुन दीजिए। हुँ, I'll do this one. येस। I'll go ahead. It triggers my imagination. Other times, no, actually not this one. I'm so sorry. नो इश्यूज़। Okay. I honestly cannot, I cannot pick any one of them. Hmm. Okay, I'll read this one, okay, before the येस। time is up. If I shrink with this night into oblivion, I will not call you, for hearing your voice will make me ache. I will not write you letters, for the time so little will not be able to carry my words. For I have realized that when you are in love, there is always one more thing to say. And if I'm gone tonight, I will come back as the first light of dawn to tell you one more thing each morning. ओके, So that is the दैट्स ब्यूटीफुल। तो हमारे आज के इस एपिसोड की एंडिंग के लिए ये बहुत ही परफेक्ट फिट था कि भाई थोड़ा-सा होपफुल बने रहें। एंड थैंक यू सो मच वैशाली, आज आपने समय निकाला, हमें आपने अपना समय दिया। एंड मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से 10 सेकंड का कुछ हमारे ऑडियंसेस के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। okay, do read Wordings of My Breath. And if you do read, I have my email ID in the back of the book, and you can reach out to me there. And, we can have a chit chat, probably. Whoever ओके, wants to talk. दैट्स ग्रेट, Yeah. दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम हम फिर से आएँगे नए ऑथर्स के साथ और नई कुछ कहानी, नए जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।